Hi guys, welcome to the first episode of the Bold Talk with the 90s couple. So guys, today we are talking about something very important. Today we are talking about questions you should ask each other before getting married. These are very important questions, and I really feel arranged marriage, love marriage, it doesn't matter what kind of marriage you're going into, but always ask these questions. And I really think these questions are going to help you, and I am sure you're going to enjoy the podcast. So stay tuned and be there throughout the podcast. The first point is priority talks. So it's very important to have priority talks क्योंकि आपके पार्टनर से आपकी ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किसको प्रायोरिटाइज करने वाला है, whether be his parents, his or her parents, और आपको प्रायोरिटी में रखेगा. I think it should be the first conversation two people have with each other. Doesn't matter if you're getting married or you're not getting married, even in relationship. क्योंकि अगर एक इंसान चाहता है कि आप प्रायोरिटी बनो और दूसरा इंसान चाहता है कि मे बी आप सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी होगे, तो in this situation the relationship is gonna go down the drain. You will break up, it will be a bad breakup क्योंकि किसी के पास एक एक्सपेक्टेशन है, किसी के पास कुछ और एक्सपेक्टेशन है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों सेम पेज पे रहो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड प्रायोरिटी. एंड इट्स ओके अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली है, और इट्स ऑल्सो ओके अगर आपका पार्टनर अग्री करता है कि हाँ ठीक है यार, मेरी भी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है, योर फैमिली इज़ योर प्रायोरिटी, सो हम लोग अपनी प्रायोरिटीज़ सेकेंड हैंड में रखेंगे. दैट्स ओके. जस्ट दैट इट्स डेफिनेटली अ टॉक दैट यू नीड टू हैव विथ योर पार्टनर. हाँ, मतलब अगर क्लैरिटी होगी तो ज़्यादा सही रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए. Which also brings us to the second point, which is the financial situation. And बहुत सारे लोग ये लोग बात नहीं करते इस चीज़ के बारे में. मुझे नहीं पता कि क्यों बात नहीं करते, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ज़रूर जानो कि आपके पार्टनर का बैंक बैलेंस क्या है, और अगर कोई क्रेडिट कार्ड डेट है, कुछ भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है. राइट क्योंकि अगर आपकी ये फाइनेंशियल डिस्कशन या फिर अगर टॉक नहीं होगी इन द स्टार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं जाके मे बी इन द मिडल या फिर जब आप साथ में रह रहे हो तब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. बिकॉज फाइनेंशियल इशू एक सबसे बड़ा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ में एज अ कपल इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, क्योंकि हर एक चीज़ रिवॉल्व अराउंड होती है फाइनेंसिस के. क्योंकि यार देखो, लाइफ में कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो उसमें पैसा लगता है. एंड अगर पैसे की बात अगर आप पहले से डिस्कस कर लेते हो, एक दूसरे के बारे में पता है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप लोग बेटर रहोगे और साथ में अच्छे खुश रहोगे, रैदर देन कि नहीं पता एंड फिर पता चला बाद में रिलेशनशिप के कि यार इसका तो ये लोन था, ये EMI चल रही थी, या फिर ये लोन है, या फिर पेरेंट्स का कोई लोन है उसको चुकाना है. इट्स ओके है, बट ये बातें पहले करो. समथिंग वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर है, सबका बैकग्राउंड और स्ट्रगल अलग होता है. किसी के लिए सेविंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, किसी के लिए नहीं होती. सम पीपल कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर दे सॉ देयर पेरेंट्स स्ट्रगल विथ मनी, and sometimes some people came from a background where they saw their parents spend the money. So it's very important to discuss these topics with your partner so you can have a very hassle-free kind of relationship life. Moving on to the third point, that is tradition and religious belief. I feel ये भी बहुत important point है जो आप लोगों को discuss करना चाहिए बिफोर गेटिंग मैरिड स्पेशली, क्योंकि हर किसी के बिलीव्स रिलीजन में और ट्रेडिशंस में बहुत अलग हो सकते हैं. आप कैसे रेज हुए हो, कौन से फैमिली में कैसे बैकग्राउंड में रेज हुए हो, और कोई कभी ज़्यादा रिलीजियस होता है या बहुत ज़्यादा पूजा करता है, और कोई उतना ज़्यादा पूजा नहीं करता, या फिर he is absolutely right about religious beliefs and also about traditions. Some people want to have certain traditions, some people don't want to have certain traditions. I like to celebrate all festivals, and अगर मैं 2-3 नए festivals और पिकअप कर लूँगी, अगर हम कहीं घूमने जाएंगे मैं वो भी सेलिब्रेट करूँगी. फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें. मे बी एक कोई रिलीजियस हिंदू फैमिली होगी जो बोलेंगे कि हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट? एंड मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा पार्टनर विथ मी सेलिब्रेट्स Christmas. Like, it's important to me. It's important to my family. Sorry, but touch wood, I love Christmas. हमारे बहुत अच्छा है. Yeah, but not just Christmas. मेरे लिए सारे festivals are very important. मेरे लिए दिवाली is important, and other like Navratris are also very important. So I want my partner to participate and to take part. I don't want to do it alone. If I wanted to do it alone, then why the hell did I get married? And I think this is very, very important for people to talk about, because I know for a fact that many men are not into religion and they don't want to do prayer like things, because apparently बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बस women का काम है पूजा पाठ करना and all, which is absolutely wrong.
It is not just our responsibility. सो रंजी ने बिल्कुल ठीक बोला एंड ये बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडियन हाउस होल्ड में, या फिर बहुत बहुत दैट दे ओनली थिंक कि फीमेल का ये पार्ट होता है. नहीं, ये आप लोगों का पार्ट भी है. बीइंग अ मैन एंड सोसाइटी में आप रह रहे हो, इट्स योर पार्ट ऑल्सो एंड यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी थिंग्स यू डू. एंड चाहे वो आप किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हो या आपकी वाइफ सेलिब्रेट करना चाहती है, आपकी गर्लफ्रेंड, प्लीज़ टेक 110% एफर्ट in enjoying that festival या tradition together. This is gonna bring us to the next point, which is talk about vacation time. So personally for me, vacation time is like extremely important. We did discuss this before getting married. And सबका vacation बहुत अलग होता है. Maybe some people want to go to Kedarnath for vacation time, which is great if you enjoy that. Someone like me, I just want to go to the beach and I just want to chill on the beach, and that is a very important discussion that we had before getting married. Right, babe? एब्सोल्युटली. देखो, हर किसी का वेकेशन अलग होता है. कोई माउंटेन पर्सन होता है, कोई बीच पर्सन होता है, कोई सिटी पर्सन होता है, कोई विलेज पर्सन होता है. हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग है वेकेशन स्पेंड करने का. एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये डिस्कस करो कि आपके पार्टनर को क्या पसंद है, क्या उसको केवल इंडिया में घूमना पसंद है या अब्रॉड घूमना पसंद है. ये सारी चीज़ें अगर क्लैरिटी रहेगी ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. I think the next point is my absolute favorite and सबसे ज़्यादा controversial point आज की डेट में. इतना controversial हो गया कि even North Korea is talking about it. So what I mean to say is that do you want to have children? The reason why I'm doing this is because I have realized that we are in a very modern era. Personally, I know friends and guys, these are Indian friends who don't want to have kids at all. And even though it might come shocking, it's absolutely normal. You know, I mean, you don't have to have kids. It's not. True. And to be honest, I'll be very honest, बच्चे सबके लिए नहीं होते. Maybe some people know how to raise kids, maybe some people don't know how to raise kids, and do not listen to your parents if they say हम raise कर लेंगे. नहीं, I mean look at yourself, did they really do a good job? No. देखो, हर किसी का सिनेरियो अलग है. कोई अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है कि थैंक यू फॉर रेजिंग अस, एंड आई मीन सबको देना भी चाहिए, बट इट्स नॉट लाइक उन्होंने बहुत अच्छा कुछ काम किया है. या फिर सी, अगर दे आर ब्रिंगिंग, इट्स ओके इफ दे आर ब्रिंगिंग यू टू दिस प्लानट, अपने ज़िंदगी में ला रहे हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने खुद के चॉइस पे ला रहे हैं. ठीक है, आपने नहीं बोला लाने के लिए. बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट मैं सच बोल रहा हूँ. ठीक है, ये कोई एहसान नहीं है. दिस इज़ ऑल लव. उनको चाहिए था उनके बच्चे हों या व्हाटएवर, उनके माँ बाप को वो चाहिए था, उन्होंने बच्चे किए, खुशी से किया, ऑफ कोर्स किए होंगे. कोई प्रेशर में भी करता है, बट यस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है. It's the most important topic because I will be very honest, if you end up having kids and one of you don't want to have kids, oh my god, your relationship is going to go down the drain. You're going to have trouble. You might get a divorce. Your kids will be as messed up as you can imagine. मतलब देखो, उनकी जिंदगी तो यार आप लोग खराब. You're ruining everyone's life here. ठीक है, उनकी कर रहे हो, अपने पेरेंट्स की कर रहे हो. So rather have this discussion. ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इसमें चाहिए कि भाई करने हैं नहीं करने. पहली बात, कितने करने हैं, कब करने हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, मेंटली स्टेबल हो, खुश हो, केवल तभी गो फॉर दिस स्टेप. Yeah, this is very important, guys. I can talk about this topic for like freaking too many hours because they don't stress this enough, and everyone says, oh, this is modern society. अगर बच्चे नहीं करने तो शादी क्यों करनी है? What? Oh my god, obviously बहुत सारे reasons है we want to get married. I am married to Aman. It was not because we love each other. We love each other, we want to spend time with each other, share our life with each other, share our experiences with each other. Because we love each other. We love each other, Yeah, this is very important. Make sure that you are aware, your partner is aware. Make sure you're having this discussion. Make sure you talk about time because this is a very important conversation, and do not if you're in love with someone and they're not on the same page with you, I would suggest this breakup. It doesn't matter if it's a 5-year relationship, 6 years. मुझे पता है people will say it's easier to say than to do it. Yeah, but no, do it because it's better to waste 6 years than to waste लाइफ टाइम. या फिर बीच में यार अपना रिलेशनशिप खराब करो जब आप 40s 50s में हो, देन यू आर गेटिंग सेपरेटेड या फिर यू गेट चीटेड ऑन. जिंदगी बेकार लगती है तब. ठीक है, उस एज में. अभी आप यंग हो, ये सब चीज़ें
ये सब चीज़ें आप हैंडल कर सकते हो। अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, ठीक है, लीव एवरीथिंग असाइड, ये सारी चीज़ें जितने भी हमने बोली हैं प्लीज़ ये सब डिस्कस करिए। एंड मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इंसान आपको देख के पसंद आ रहा है, उस आप अंडरस्टैंडिंग बन रही है या नहीं बन रही, जो भी है सारी सिचुएशन, आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप के लिए, जो कि आपको डिस्कस करने ही करने चाहिए। A lot of parents will hate this. Just don't listen to your parents. Like they live their life, now you live your life. Even if you are living in a joint family, make sure you discuss about it, क्योंकि end of the day, just two individual. So, moving on to the next point, career goals and aspiration. Career goals एक बहुत important point है if you are very young, obviously if you are getting married. Career goals and क्या आप aspire करते हो, you have to discuss each and everything with your partner, because हर किसी के लिए उनकी लाइफ चाहे वो शादी कर रहे हैं बट स्टिल इंडिविजुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आपकी वाइफ, होने वाली वाइफ है या फिर गर्लफ्रेंड है, उसको पता होना चाहिए कि ओके, हियर इज़ दिस पर्सन हु वांट्स टू गो हियर टिल हियर इन हिज लाइफ, और ये वो करना चाहता है या ये वो बनना चाहता है या ये वो बनना चाहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए। Yeah, because if two career-driven people get married, I think it can be a little bit difficult, because मेरा perspective ये when it comes to marriage and careers, one person's career is gonna be a little bit more difficult. मतलब by difficult I mean कि maybe someone's career is like 70% and maybe someone's career is like 30%. What I mean to say is that someone wants a lot more from the career than some other people. So you have to be okay with it. If someone wants a lot, so I can talk about our case, right? Aman is way more career driven than I am. I am absolutely okay with it. I am here to help him. I'm here to help him grow. For me, it's okay if I don't take the lead and I'm on this back seat. It's fine by me. A lot of women out there, maybe who are way more intelligent than I am, way more successful, have achieved more. Maybe for them, they want to be in the front seat. So that is something that you need to discuss with your partner. Yeah, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके मेल पार्टनर की कि इफ़ द वुमेन इज़ मोर करियर ओरिएंटेड या फिर उनका एस्पायर है कुछ ज़्यादा बड़ा करने का, तो आपको वो बैक सीट लेनी पड़ेगी अगर आपको अपना रिलेशनशिप सक्सेसफुली चलाना है। And we see this all the time. I mean, it's not like we are telling you something any different, because if we even look at a lot of like people's career on television, or like, let's just take the most iconic couple right now, Virat and Anushka. I feel like Anushka is there in the backseat and she's really, really helping him grow to his full potential. So true, because बहुत interviews में Virat has mentioned that my wife has supported me a lot, and she has taught me so many new things. Yeah, giving him the confidence, giving him the support he needed. Crucial point of time उनके career में, because he is at his peak of his career. मैं बोलूँ तो people can say whatever they want to say, but she has supported him a lot, and that is the reason why he gives her a lot of credit for that. So I think this is two things. This is one thing that both the partners need to like really talk about, because you do not want to be in a relationship where you both are like, okay, so we got married now, मैं अपना काम कर रहा हूँ, you do your work, but then you're living together. Remember, you're not living with your parents, so there will be a lot of responsibilities and you will have to do a lot of things. So this can be a little chaotic, and there can be a lot of fights. So yeah, it's so true. Also ऐसा भी हो सकता है कि till let's suppose you're 40 years, ठीक है, 40-45, तो your wife is supporting you, but if she wants to do something उसके बाद, then it's your responsibility to support your wife in doing what she wanted to do, right? Yeah. Because she helped you 45 years तक उसने आपकी हेल्प करी। Not 45, like 20 years. No, I mean मैं कह रहा हूँ ओके या उस एज तक मैं ये कह रहा हूँ, तब अगर उनको कुछ करना है तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको सपोर्ट करो, ठीक है, वो हो ना हो या whatever, वो हमें नहीं पता, because that is the result हमें नहीं पता, but you have to be there because she was there for you. Yeah, same. I would totally agree, because it's not like that I'm always there, behind Aman, or like he's always in the front seat. There are times when there are some things that I do that are very important, and it takes like days, maybe like 2-3 days, and those 2-3 days Aman puts those 2-3 days Aman. अब मुझे बस 2-3 दिन का मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा। 2-3
मैं कह रही हूँ कि वो 3 दिन you put yourself in the back seat and you let me like do my work and you take care of everything. That's what I'm saying. मैं ये कह रहा हूँ वो 2-3 दिन ही है, वो काफी ज्यादा दिन है. Of course, 2-3 दिन नहीं है of बिल्कुल. course. But yes, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो अगर आपको अपना रिलेशनशिप अच्छे से चलाना है तो ये आपको ये सब करना पड़ेगा. Which also moves it to the next point, which is a little lighter, which means favorite food. A lot of people will say ये important है क्या यार तुम क्या बातें कर रहे हो, लेकिन है important क्योंकि guys आप लोग अपने पार्टनर के साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी टाइम, मे बी बेड टी टाइम, आई डोंट नो व्हाटएवर यू डू. देखो हम तो सारी चीजें साथ में करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Yeah, so like you have to be on the same page, no, in terms of like veg, non-vegetarian. Maybe your partner wants to eat, God knows, extra animals. I don't know. Oh yeah. So true because देखो वो इशू करता ही है. आप कुछ भी बोलो कि हाँ मैं वेजिटेरियन ठीक हूँ बट इफ़ ही वांट्स टू ईट नॉन वेज ही कैन ईट, तो वो कहीं ना कहीं जाके मतलब बहुत सारे लोग सेटल कर लेते हैं और दे आर ओके विद इट. ओके वे सॉरी, गुड फॉर देम. मजाक नहीं उड़ा रहा बट मैं बोल रहा हूँ बहुत मतलब एक बड़ा वो है. इट्स डिफ़िकल्ट बट अगर आप लोग दोनों वेजिटेरियन हैं गुड फॉर यू गाइस. अगर नॉन वेजिटेरियन है गुड फॉर यू गाइस. तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें अगर पहले से क्लियर हो जाती है ना तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि कभी घर में हम कुछ चीज़ बना रहे हैं और वो दूसरे इंसान को ना पसंद आए, उसकी स्मेल पसंद ना आए, बड़ा प्रॉब्लमेटिक है भाई. So this point is my favorite because for me this point is like मतलब मुझे इस पॉइंट से एंग्जाइटी होती है. What I mean to say is that what I mean to say is that does something trigger you or irritates you? So I'm gonna give you guys my example because that's all I can do right now. A lot of things irritate me and trigger me, and when things trigger me I get anxiety and I get panic attacks. Not everyone gets these kind of problems, not everyone has this kind of reaction. I do, and a lot of people have worse reactions, so you need to be careful. Always talk about trigger points. So let's say for me a trigger point is, well, something that can ruin my day. In the morning when I wake up, I need silence, and I really need silence. I cannot tolerate loud music, people talking to me, loud sounds. Like मतलब it's done. Like I will probably end up crying. तो हमारे रिलेशनशिप में ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली हमने डिस्कशन किया बिकॉज मुझे पता चला कि रांझी इज़ लाइक दैट एंड आई एम समवन जिसको यू नो सुबह उठे लाउड म्यूज़िक पसंद है या फिर यू नो डांस करना, एक्सरसाइज करना. इट डजेंट मैटर टू मी, लाइक मुझे पसंद है ज़ोर से. बट जब यू नो वी स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, सो ये एडजस्टमेंट वी हैड टू डू बिकॉज उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट था. तो मैंने कहा इट्स ओके, doesn't have to be my way. So yeah, because you have to see, guys, you must be wondering, oh, he just gave in for his wife. No, I'll tell you what happens. What happens to me and my reaction is worse. What happens to Aman can adjust that. It is not something that he has to do. True. It is something that he enjoys doing. Something that you enjoy doing and something that affects you deeply are two different things which everyone needs to take care of and be careful about. ऑल्सो बेब ये चीज़ तो हैंडल हो सकती है मेरी वाली. अगर मुझे इतना ज़ोर से सुनना है तो आई कैन पुट इन माई ईयरफोन्स, ठीक है, एंड मैं ज़ोर से म्यूज़िक सुन सकता हूँ. या फिर मुझे अगर रन करने जाना है तो मैं बाहर जा सकता हूँ. अगर मुझे सन लेना है या एक्सरसाइज करनी तो मैं कर सकता हूँ. बट साइलेंस इज समथिंग जो केवल साइलेंट होके आएगा, राइट? That's true. So anyways, which brings us to the next point, which I think something that Aman thinks, well, it's important for everyone, but I think for my husband this point is very important, and that is about intimacy. Intimacy. All right. So coming to my favorite point, intimacy. Not favorite, but it is very, 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 very important. Intimacy in a couple's life relationship is super important, and you need to discuss in depth about intimacy because आगे जाके in your relationship maybe 2 years or 3 years down the lane आपको ऐसा फील हो सकता है कि one or the other partner does not feel the same way, same like उसके wants उतने ज़्यादा नहीं हैं in terms of intimacy, आपके ज़्यादा हो सकते हैं. एंड ये होता है रिलेशनशिप में that एक पार्टनर एग्रेसिव होता है एंड दूसरा पार्टनर थोड़ा उतना एग्रेसिव नहीं होता, चिल्ड आउट होता है या फिर उतना उसका मे बी कभी कभी मन नहीं करता टू यू नो बी इंटीमेट विद यू. सो ये सब पॉइंट आपको डिस्कस करने चाहिए. And also intimacy, guys, is not just about having sex. There's a lot more things that comes with intimacy. If you are a guy and you want to get intimate every single day, then you have to work for it. If your wife is doing a lot of work, wash the dishes at night, you know. आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. Yeah, so you guys have to really discuss about this intimacy issue and also be mature about it. Like you're not
it's very different when you're young, it's very different when you're old. So be mature about it. By mature, what I mean is like, don't just throw away something, your relationship, because there is not enough intimacy time. Like, grow up. Okay, so yeah, you need to work really hard on your intimacy and talk about it. आप आराम से प्यार से अपने पार्टनर से उस बारे में बात करो. कभी कभी ऐसा होता है. So अगर बात करोगे, डिस्कस करोगे, so I think each and everything will be good. Another point which I think is very important for both the partners to discuss is who gets to make the decisions. Orthodox way में सब बोलेंगे कि the man gets to make the decision, right? Because I don't know, he's the man of the house. Whatever that means, I think whoever, I don't know, मतलब ठीक है. Big laughs on that. Yeah. So no, I think देखो, eventually one person will be making the decision, I feel, but it should be both the partners talking to each other and coming to a conclusion. Yeah. There are also level of decisions, okay? What to eat today maybe can be the woman's decision. I'm deciding everything. Absolutely. Where to go on vacation, maybe you can alternate. डिस्कस, और जिसके पास ज़्यादा टाइम है तो वो डिसाइड वो कर सकता है. ऑब्वियसली डिस्कस करना बहुत अच्छा रहता है, बट जिसके पास ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम, वो ज़्यादा रिसर्च करेगा. एंड There are other decisions as well that needs to be made. Life decision, financial Yes. decisions, Yeah. house के decision. So that is also very important, and obviously डिस्कस हमें करना चाहिए. बट एट द एंड ऑफ द डे, जितना मैंने देखा है हमारे रिलेशनशिप में, तो कभी कभी हम एक दूसरे पे मतलब छोड़ देते हैं कि ओके, आप ये वाला डिसीजन ले लो, या आप ले लो ये वाला डिसीजन. घर की कोई चीज़ है तो आई रादर प्रेफर कि रांझी वो डिसीजन ले, एंड रांझी फाइनेंशियल डिसीजंस एंड अदर जो घर के वैसे डिसीजंस होते हैं वो मुझ पे छोड़ देती है. तो वो हमने एक हमने वी हैव, ये समझ लो कि हम इतने टाइम के बाद एक डिसीजन पे आ गए हैं कि हमारे लिए वो काम करता है. आपके लिए शायद ना करे, बट मे बी करे. तो आप वो डिस्कस कर सकते हो एंड देख सकते हो. मुझे लगता है कि बेस्ट है हर चीज़ डिस्कस करो, ठीक है? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आप डिस्कस करो. मैं ये नहीं कह रहा उसके बाद मत करो, अपने अपने डिसीजन लेने लग जाओ. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. अभी भी हम लोग हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड हमें लगता है कि हाँ, इस इंसान को इस बारे में ज़्यादा पता है तो हमारे लिए बेटर डिसीजन लेगा. I really feel things will change over time, but you need to have a good ground. मतलब obviously 5 साल बाद, 10 साल बाद चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन start from a good ground. I think that is very important, which also brings us to the next point, because I think the next point is a lot got to do. The next point has a lot to do with decision making, which is TV time, television time, basically movie preferences, song preferences. I will tell you my thing. If Aman was into techno, I would not be with him today, because I just cannot tolerate techno music. मतलब मेरा सर दर्द होता है, right? And that is just one of the things. But yeah, we do have a lot of the same preferences when we're watching TV or when we're watching a show. Yeah, absolutely right. And thank God she's okay with me watching sports, cricket, basketball, because I love them. And I'm glad she has come to this, she has made peace with it कि वो इतना क्रिकेट देखता है या इतना बास्केटबॉल देखता है. मतलब क्रिकेट में बहुत ज़्यादा देखता हूँ, बिकॉज आई लव क्रिकेट, एंड शी इज़ ओके विद दैट. एंड आई गिव हर when she wants to watch something, I watch it with her, because that is also very important. क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, then आपके उसमें issues आएंगे कि भाई आप तो बस अपनी चला रहे हो, या तुम तो बस अपनी चला रही हो. So that is also not right. You have to. Also, I think it's very good couple time, and I think you need to learn about each other. I think शादी का मतलब है being open-minded to a very big extent. And when you become, actually this for us it started before we got married. We used to watch shows together on, like, we used to watch video call. Yeah, हम movies देखते थे. Yeah. It was very cute. It was very Especially during lockdown, I think बहुत ज़्यादा हमारे लिए वो best work करा कि हम video call पे हैं, we're watching a movie together or a show together. And yeah, I mean, fun to watch a show or something you like with your partner, because I think आपको करना चाहिए. कोई long distance कर रहा है उसको करना चाहिए. I'm sure आप करते भी होगे. yeah, I mean, it's a very important decision. And same with music. People can like what they like, but I mean, again, it really depends. Maybe for some people like me, it's important. Maybe for some girls, they don't give a shit. सबका अपना अपना वे ऑफ लाइफ है. I mean, हमें 90s के बॉलीवुड सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद है. मूवीज We are the 90s. That is the reason why we are the 90s couple. This is the only reason why we put that user name, the 90s couple. उसका मतलब ये नहीं हमारी सोच 90s की है, ठीक है? By the way, 90s की सोच बहुत मॉडर्न थी. आपके पेरेंट्स की नहीं थी, वो
तो पेरेंट्स तो 70 के हैं ना, 70-80 के हैं मतलब. Alright, coming on to the next point, habits. Habit impact us in a very long lasting way, क्योंकि especially if you have some bad habits, I would give credit to my wife, because I had a lot of bad habits, not drinking, smoking or drugs, nothing like that. But yeah, in general, I used to speak like random stuff, or swear words, which I don't now. Yeah. I'm very thankful to my wife. So yeah, these things are very, very important. You have to discuss. Just discuss this before getting married about your habits and things that are important to you in terms of that it doesn't affect you or your relationship. And I think anyways, it's good to have good habits, and I think it's important to grow. So it's not like, don't be so adamant about it कि भाई नहीं, this is my habit, मैं तो ऐसे ही करूँगा या ऐसे कुछ चेंज नहीं करूँगा. हर किसी की होती हैं देखो हैबिट्स, एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर हैबिट्स, and you will change with time. So respect change and growth as well. This brings us to our final point, which I feel is like the most important point, लेकिन हम end में बोल रहे हैं, I don't know why. Means the living situation. Always discuss living situation before getting married. And what I mean to say is that if you're going to be living separately or with the parents, or maybe there is a third person living, so make sure you and your partner talk about this, because this will be a major change and it will affect both your lives and the lives of people living with you. Absolutely. हाँ, अगर आपके ये क्लैरिटी रहेगी तो आई थिंक दैट विल टेक यू अ लॉन्ग वे, और आपके लड़ाइयाँ नहीं होंगी, सबसे पहली बात है, या फिर आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगी अगर ये सारी सिचुएशंस पहले से क्लियर्ड आउट हैं. So, I mean, this concludes our first podcast, our first episode of Bold Talk with the 90s couple. We hope you guys enjoyed the whole podcast. हमने पूरी कोशिश करी अपने तरफ से सारे पॉइंट्स कवर करने की. अगर नहीं करे तो नेक्स्ट एपिसोड में हम ट्राई करेंगे उसको कवर करना. That you comment down if there is anything that you want us to discuss in the future podcast, and thank you so much for staying till now if you did. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you so